Just look at the impact of that multi-crore losses. Passengers who were in those trains, can you imagine the impact on them? And just look at these visuals coming from Bihar, where there was large-scale arson today. A toll plaza, BJP leaders' offices and homes, trains. And here children actually weeping as they're stuck inside a bus. This bus was stuck in protest in Bihar. Children trapped in the middle, don't know what's going on, but just caught in there in the middle. So really, the violence we're seeing, the trains, arson. Why exactly is Bihar such an epicenter of these protests? It's not a state which sends the most aspirants to the army, but it's really also an indicator of the huge unemployment crisis. Manish speaks to aspirants there on why the protests have now become sheer vandalism. At Patna's Gandhi Maidan, where thousands of students every day, round the year, they practice not only for the army, but also for the other services like paramilitary or Bihar police. And we have some students. आप लोग आर्मी के लिए भी तैयारी करते हैं और अर्धसैनिक बलों के लिए भी। जी हाँ। ये बताइए कि ये जो नया केंद्र सरकार का स्कीम आया है, उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? सर, जैसे मान लीजिए हम लोग 4 साल के लिए भर्ती के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोले हैं कि 4 साल में आपको हम अलग अलग कोर्स करवाएंगे, निकालने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में डालेंगे। हम उससे एक बात पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हुए तो स्किल के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। हम लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं, गन चलाना जानेंगे, उसकी वहाँ पे कंपनी में कौन सा गन चलाने का काम हम लोग को देगा? सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे क्या हम लोग? क्यों? यानी 2 साल के प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए सर। हाँ, तब ये बात सही है। 2 साल के लिए मात्र 2 साल के लिए चुनाव भी तो 2 साल के लिए होना चाहिए। जब आपने जो भर्तियां हैं जो 4 साल के लिए केवल कर दिया है, तो ये नेता लोग के चुनाव भी तो 4 साल के लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपका और उसमें से 15 में उठ गया भरोसा, उसमें से तो 15 में उठ गया भरोसा। जब बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, तब ये भरोसा उठ गया उसमें से। 6 साल से बातें नहीं कुछ चल रहा है। मात्र 6 साल से हम दौड़ रहे हैं, मात्र 4 साल के लिए। सर, आर्मी एक मेरा माँ बाप हम पे भरोसा किया है कि मेरा बेटा आर्मी बन के आएगा। हम गरीब घर से सर यहाँ पटना में आके पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हर सुबह गंगा नदी जाते हैं बाला में दौड़ने के लिए, मात्र 4 साल के लिए। ये 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे सर? भीख मांगेंगे, हनुमान मंदिर के किनारे भीख मांगेंगे। आर्मी एक सम्मानजनक पद होता है, 4 साल में तब आर्मी बन के हम किसी का ड्यूटी करेंगे, सरकारी प्राइवेट ड्यूटी करेंगे। अच्छा रैंक ऑफिसर है, उनको जितना वैल्यू मिलता है, जितना मेरे गांव में सिपाही को वैल्यू मिलता है, जितने रिस्पेक्ट से उनसे बात आदमी करते हैं, उन लोग हम लोग अंदर भावना से जाते हैं। ये नहीं कि किसी नेता के बेटा को आज तक गया फौज में, आज तक कोई शहीद हुआ नेता बेटा? नाथ सिंह जो बोल रहा है, उसका बेटा क्या कर रहा है? नेता का नेता बेटा नेता बन रहा है। So the focus of what the aspirants are saying, the big issue is the tenure only for 4 years. This, even though the government made a major compromise by late night, actually saying that the age limit would be increased to 23 years. But in Bihar, the big worry remains that how these protests have become all about arson and looting, a toll plaza set on fire, stone pelting, trains torched. In fact, young men in masks are going to various stations and vandalizing public property, and the big focus of anger is also politicians. So BJP leaders are being targeted, and in fact they're hitting out, blaming both Lalu Prasad Yadav's RJD for the violence and also indicating that the Nitish Kumar government, which has asked for this Agniveer scheme to be re-looked at, isn't doing enough. Target railway stations, toll plazas and the homes of BJP leaders. Protests against the new recruitment scheme Agnipath rapidly descending into open vandalism and chaos as hundreds of young men with sticks, masks and stones attacked all symbols of what they say is a decision that ruins their future prospects. In shocking visuals, bogies of trains completely burnt, from the Jammu Tawi Express at Motihari Nagar on the Hajipur-Baroni line and coaches of the Bihar Sampark Kranti Express burnt at Samastipur, as masked youth went on a rampage. जब आपने जो भर्तियां हैं जो 4 साल के लिए केवल कर दिया है, तो ये नेता लोग के चुनाव भी तो 4 साल के लिमिटेड होना चाहिए। Also in the firing line were BJP MLAs and workers. Security now increased at BJP offices across the state. The House of Bihar's Deputy Chief Minister Renu Devi of BJP legislature attacked. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 साल की नौकरी और नेता में दोनों में अंतर होता है। नौकरी नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये कौशल विकास की ट्रेनिंग है, ये सेना की कौशल विकास की ट्रेनिंग। In a few hundred meters away in the same town of Betia,
Stones pelted at the residence of BJP MP and Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal, even as the MP was inside his residence. Seeing the targeted attacks, security increased at BJP offices across the state. जानबूझकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि युवाओं को अग्निवीर से कोई दिक्कत होने वाली है, जबकि यह बिल्कुल साफ है कि इसमें रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं होगा। 17 साल में जो बच्चे 12वीं पास नहीं किए होंगे, जब वह 4 साल उनका पूरा होगा तो उनको 12th का सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा। Ex-army chiefs strongly condemned this vandalism, saying youngsters like these don't belong in the armed forces. But the big question remains why Bihar has emerged as the epicenter for protests against the new scheme. The reason experts say is that it is one of the states in the country with the highest rate of unemployed young people, nearly 38 lakhs. Many who spent years preparing for government exams like the civil services, the armed forces and the railways. The rate of unemployment in Bihar at 14% is nearly double the national average. With Manish Kumar in Patna, in Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV.